नमस्कार दोस्तों, मेटलर्जी क्यूएनए में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मटेरियल साइंस का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, आप अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथों साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर एक नया नया अपडेट आपके पास पहुंचते रहे। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइप जनरली यूज्ड फॉर conveying water in India is stainless steel, cast iron, wrought iron या lead line steel। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कास्ट आयरन। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइप जनरली यूज्ड फॉर conveying water in India is, सही आंसर है ऑप्शन बी, कास्ट आयरन। नेक्स्ट है, the ratio of thermal and electrical conductivity is same for all the material at the same temperature. This ratio is proportional to dash at around room temperature. सही आंसर है ऑप्शन ए, टी। The ratio of thermal and electrical conductivity is same for all the material at the same temperature. This ratio is proportional to dash at around room temperature। सही आंसर है ऑप्शन ए, टी। नेक्स्ट है, कास्ट आयरन हैज वेरी हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, शॉक रेसिस्टेंस या रेसिस्टेंस टू ब्रिटलनेस। सही आंसर है ऑप्शन ए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कास्ट आयरन हैज वेरी हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है, निकेल इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, सही आंसर है ऑप्शन डी, मोनल मेटल। निकेल इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मोनल मेटल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट दोस्तों, लाइट वेट मेटालिक एलॉय यूज इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री इज एल्यूमिनियम, हाई सिलिकॉन आयरन, डुरालुमिन, फॉस्फोरस ब्रोंज। सही आंसर है ऑप्शन सी, डुरालुमिन। Lightweight metallic alloy used in aircraft industry is duralumin। नेक्स्ट दोस्तों, मैक्सिमम कार्बन कंटेंट इन कास्ट आयरन इज डैश %। सही आंसर है 4.3, ऑप्शन डी। मैक्सिमम कार्बन कंटेंट इन कास्ट आयरन इज डैश %। सही आंसर है ऑप्शन डी, 4.3। नेक्स्ट दोस्तों, डैश मेटल मेल्स इन बॉइलिंग वाटर, गन, वुड, बेल या मोनेल। सही आंसर है ऑप्शन बी, वुड मेटल। डैश मेटल मेल्स इन बॉइलिंग वाटर, सही आंसर है ऑप्शन बी, वुड मेटल। नेक्स्ट है, डक्टिलिटी ऑफ ए मटेरियल विथ वर्क हार्डनिंग इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन अनचेंज्ड या अनप्रेडिक्टेबल। सही आंसर है ऑप्शन बी, डिक्रीज। डक्टिलिटी ऑफ ए मटेरियल विथ वर्क हार्डनिंग, ऑप्शन बी, डिक्रीज। नेक्स्ट है, कॉन्स्टेंटेज इन एन एलॉय ऑफ, सही आंसर है ऑप्शन ए, कॉपर 55% एंड एसएन 45%। Constantine is an alloy of copper 55% and SN 45%, option A। Next, for platinum thermocouples, lead wires are made of copper and copper nickel alloy, copper and iron, iron and nickel या tin and nickel। सही आंसर है ऑप्शन ए, कॉपर एंड कॉपर निकल alloy। For platinum thermocouples, lead wires are made of copper and copper nickel alloy। Next है, ceramic recuperators are generally made of silicon carbide, calcium carbide, fire clay bricks या high alumina bricks। सही आंसर है ऑप्शन ए, सिलिकॉन कार्बाइड। सीमेंटाइट recuperator are generally made of silicon and silicon carbide। Next है,
The main purpose of galvanizing iron sheet is to harden the surface, increase its glossiness and luster, prevent the action of water या prevent the action of oxygen. सही आंसर है ऑप्शन सी, prevent of action of water. The main purpose of galvanizing iron sheets is to, सही आंसर है ऑप्शन सी, prevent the action of water. Next, which has the maximum melting point out of the following? स्टील, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील या रॉट आयरन. सही आंसर है ऑप्शन डी, रॉट आयरन. व्हिच हैज द मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट आउट ऑफ द फ्लोइंग. सही आंसर है रॉट आयरन. नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज इन आयरन इंक्रीज इट्स मेल्टिंग पॉइंट, डज नॉट इफेक्ट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, डिक्रीज इट्स मेल्टिंग पॉइंट या मेक इट मेलिएबल. सही आंसर है ऑप्शन सी, डिक्रीज इट्स मेल्टिंग पॉइंट. द प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज इन आयरन डिक्रीज इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन सी. नेक्स्ट है दोस्तों, कार्बन परसेंटेज इन द सेम इन कास्ट आयरन एंड रॉट आयरन, पिग आयरन, माइल स्टील या हाई सिलिकॉन आयरन. सही आंसर है ऑप्शन बी, पिग आयरन. कार्बन परसेंटेज इन द सेम इन कास्ट आयरन एंड पिग आयरन, ऑप्शन बी. नेक्स्ट है दोस्तों, द पर्पस ऑफ नाइट्राइडिंग द स्टील इज टू हार्डन इट्स सरफेस, सॉफ्टन इट्स सरफेस, इम्प्रूव इट्स रोलेबिलिटी या नॉन ऑफ देज. सही आंसर है ऑप्शन ए, हार्डन इट्स सरफेस. The purpose of nitriding the steel is to harden its surface, option A. Next, which of the following has the least carbon percentage? Low carbon steel, mild steel, wrought iron या white cast iron. सही आंसर है ऑप्शन सी, wrought iron. Which of the following has the least carbon percentage? सही आंसर है ऑप्शन सी, wrought iron. Next, nitriding of steel is done in electric furnace at 10 डिग्री सेंटीग्रेड. सही आंसर है ऑप्शन ए, 510 डिग्री सेंटीग्रेड. नाइट्राइडिंग ऑफ स्टील इज डन इन इलेक्ट्रिक फर्नेस एट 510 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट, मेटालॉइड इज हाईली electronegative in nature, an element which exhibits the properties of both metal and non-metal, या सी an alloy या डी all of above. सही आंसर है ऑप्शन डी, all of above. Metalloid is highly electronegative in nature, an element which exhibits the properties of both metal and non-metal, या an alloy. सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स द ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील? सिंपल हेक्सागोनल, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक या नॉन ऑफ देज. सही आंसर है ऑप्शन सी, फेस सेंटर क्यूबिक. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज द ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील? सही आंसर है फेस सेंटर क्यूबिक. नेक्स्ट, टेम्परिंग ऑफ स्टील इज डन टू मेक इट ब्रिटल, हार्ड, रोलेबल या सॉफ्ट. सही आंसर है ऑप्शन डी, सॉफ्ट. टेम्परिंग ऑफ स्टील इज डन टू मेक इट सॉफ्ट, ऑप्शन डी. नेक्स्ट, with increase in carbide या graphite ratio in cast iron, its hardness and brittleness increase, ductility decrease या both A and B या neither A nor B. सही आंसर है ऑप्शन सी, both A and B. With increase in carbide or graphite ratio in cast iron, its hardness and brittleness increase and ductility decrease. Next,
Carbon is present in steel wholly in the combined form phase free state as graphite या both A and B या neither A nor B। सही आंसर है ऑप्शन ए combined form। Carbon is present in steel wholly in the combined form। Next है which of the following crystal structure characterize the ferritic stainless steel free center cubic face center cubic body center cubic या simple hexagonal या none of these। सही आंसर है ऑप्शन बी body center cubic। which of the following crystal structure characterize the ferritic stainless steel। सही आंसर है ऑप्शन बी body center cubic। नेक्स्ट है how many atoms are there per unit cell in a body center cubic lattice system 2 3 4 या 6। सही आंसर है ऑप्शन ए 2। how many atoms are there per unit cell in a body center cubic lattice system। सही आंसर है ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट है how many molecules per unit cell are there in a face center cubic lattice। सही आंसर है ऑप्शन बी 4। how many molecule per unit cell are there in a face center cubic lattice is। सही आंसर है ऑप्शन बी 4। आयरन रस्ट इज फेरस ऑक्साइड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड या पाउडर्ड आयरन या फेरिक सल्फाइड। सही आंसर है ऑप्शन बी hydrated ferric oxide। iron rust is hydrated ferric oxide option B। नेक्स्ट है दोस्तों which one is remelted and poured into mold to get cast iron wrought iron pig iron low carbon steel या mild steel। सही आंसर है ऑप्शन बी pig iron। which one is remelted and poured into mold to get cast iron। सही आंसर है pig iron ऑप्शन बी। नेक्स्ट है corrosion involve exchange of electrons in dash corrosion। सही आंसर है ऑप्शन सी both A and B मतलब केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल। corrosion involve exchange in electrons in chemical and electrochemical corrosion option C। next which one has the maximum tensile strength out of the following nodular cast iron pig iron white cast iron या grey cast iron। सही आंसर है ऑप्शन ए nodular cast iron। which one has the maximum tensile strength out of the following। सही आंसर है ऑप्शन ए nodular cast iron। next which is not a thermoplastic material polystyrene acrylics polypropylene या none of these। सही आंसर है ऑप्शन डी none of these। नेक्स्ट है which is not present in cast iron sorbite ferrite austenite या all A B and C। सही आंसर है ऑप्शन ए sorbite। which is not present in cast iron। सही आंसर है ऑप्शन ए sorbite। नेक्स्ट है dash changes to austenite on heating above critical temperature martensite cementite perlite या both A and B। सही आंसर है ऑप्शन डी A and B मतलब martensite and cementite। dash changes to austenite on heating above critical temperature। सही आंसर है ऑप्शन डी martensite and cementite। next है which is the hardest out of the following austenite perlite ferrite या cementite। सही आंसर है ऑप्शन ए austenite। which is the hardest out of the following। सही आंसर है ऑप्शन ए austenite। next है presence of dash in steel decrease its hardenability मैग्नीज कोबाल्ट सिलिकॉन या मोलिब्डेनम। सही आंसर है ऑप्शन बी कोबाल्ट। प्रेजेंस ऑफ डैश इन स्टील डिक्रीज इट्स हार्डनेबिलिटी। सही आंसर है ऑप्शन बी कोबाल्ट। नेक्स्ट है
Hardenability of steel is affected by the carbon content, grain size, amount of alloying element या D all of above. सही आंसर है ऑप्शन डी all of above. Hardenability of steel is affected by the carbon content, grain size and amount of alloying element. सही आंसर है ऑप्शन डी all of above. नेक्स्ट है which is the quickest steel hardening process? Anodizing, carburizing, nitriding या induction hardening. सही आंसर है ऑप्शन डी induction hardening. Which is the quickest steel hardening process? सही आंसर है induction hardening. Next है the properties of material which opposes the creation of magnetic flux in them is called resistance, reluctance या डाइलेक्ट्रिक या परमियंस. सही आंसर है ऑप्शन बी रिलक्टेंस. द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल व्हिच opposes the creation of magnetic flux in them is called reluctance. नेक्स्ट है polymer having very strong interaction forces is suitable for making rubber, इलास्टोमर, फाइबर या प्लास्टिक. सही आंसर है ऑप्शन सी फाइबर्स. पॉलीमर हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन फोर्सेस इज सुइटेबल फॉर मेकिंग फाइबर्स. नेक्स्ट है कार्बन कंटेंट इज द हाईएस्ट इन माइल्ड स्टील, यूटेक्टिक एलॉय, हाइपोयूटेक्टिक एलॉय या हाइपर यूटेक्टिक एलॉय. सही आंसर है ऑप्शन डी हाइपर यूटेक्टिक एलॉय. कार्बन कंटेंट इन द is the highest in hyper-eutectic alloy. Next है which of the following will have the highest annealing temperature? Low carbon steel, mild steel, medium carbon steel या high carbon steel. सही आंसर है ऑप्शन ए low carbon steel. Which of the following will have the highest annealing temperature? सही आंसर है ऑप्शन ए लो कार्बन स्टील. नेक्स्ट है मैंगनीज इन स्टील इफेक्ट इट्स डक्टिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस या नन ऑफ दीज. सही आंसर है ऑप्शन बी टेंसाइल स्ट्रेंथ. मैंगनीज इन स्टील इफेक्ट इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ. नेक्स्ट है the ability of a material to absorb energy in the elastic ranges in a measure of its toughness, resilience, malleability या brittleness. सही आंसर है ऑप्शन बी resilience. The ability of a material to absorb energy in the elastic range in a measure of its resilience. Next है the ability of a material to offer resistance to scratching or indentation is a measure of its brittleness, toughness, hardness या resilience. सही आंसर है ऑप्शन सी hardness. The ability of a material to offer resistance to scratching or indentation is a measure of its hardness. Next है the maximum strength which a specimen can tolerate without failure when the stress is repeated for a specified number of cycles is called the compressive strength, endurance limit, creep limit या tensile strength. सही आंसर है ऑप्शन बी endurance limit. The maximum strength which a specimen can tolerate without failure when the stress is repeated for a specified number of cycles is called the endurance limit.